गुड मॉर्निंग लिसनर्स। मेरे आज के लेक्चर में मैं अपने पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ही नर्व सेल या न्यूरॉन्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग एमएससी सेमेस्टर थर्ड के सेल बायोलॉजी के 13A पेपर के बारे में स्टडी कर रहे थे और इसमें डाइवर्सिटी ऑफ सेल नामक टॉपिक में हमने डिफरेंट टाइप की सेल्स के बारे में डिस्कस किया था और उसी की कंटिन्यूएशन में हमने पिछले लेक्चर में नर्व सेल स्टार्ट किया था। नर्व सेल की एनाटॉमी में हम कुछ पोर्शन उसका कर चुके थे। पिछले लेक्चर में मैंने सेल बॉडी या सोमा के बारे में आप लोगों से बातचीत की थी। आज हम इसी की एनाटॉमी, नर्व सेल की एनाटॉमी जो है उसी का नेक्स्ट पॉइंट लेते हुए इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। डेंड्राइट्स नर्व सेल के अंदर क्या होते हैं? हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ डेंड्राइट्स विच आर अटैच्ड टू द सोमा ऑफ और सेल बॉडी. Dendrites, they are tree-like structure. You can see in this figure, these are tree-like structures, tree-like branched structures that arise from the nerve cell body. Depending on the cell, dendrites may extend significantly, resembling a highly branched tree. Apart from the main dendrite branches, dendrites may contain additional protrusions known as dendrite spines. These small membranous elongation they receives input from the axon of another cell, and thus they play an important role in the transmission of nerve impulses by increasing the overall surface area. ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये डेंड्राइट्स जो हैं वो दूसरी वाली जो एक्सॉन होती है, दूसरी वाली जो नर्व सेल होती है, उनके एक्सॉन से नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं और अपनी स्वयं की जो नर्व सेल है उसमें पहुंचाने का काम करते हैं और एक तरह से सरफेस जो ओवरऑल सरफेस एरियाज जो हैं उसको इंक्रीज़ करने का काम ये इन डेंड्राइट्स के द्वारा किया जाता है. एज एक्सपेंशन ऑफ द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट spines they also contain cytoplasm and different types of organelles. In particular, dendrites spines contain a variety of microtubules and some neurofilaments that contribute to the changes observed in their shape. Dendrites they receive electrical impulses from axons of other nerve cells, which in turn accumulate in the soma before being sent to the axon hillock. Now we will come to the axon hillock. What is axon hillock? Axon hillock, it is a specialized region from which the axon extends. As such, it is the area at which the axon is attached to the cell body. Here you can see this one is axon hillock, and this axon it is attached to the cell body by the axon hillock. The axon hillock it lacks many cell organelles. However, it contains various elements of cytoskeleton as well as a few of the organelles that are transported to the axon from the cell body. Initial segment, this is the region between the axon and hillock and the front part of the myelin sheath. This one is the initial region. This region it is said to be the area for the initiation of action potential. The axon hillock it is cone shaped. Cone shaped का होता है axon hillock और यहाँ पर action potential जो है उसका initiation होता है. नेक्स्ट व्हाट इज एक्सॉन? नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमिकल पार्ट है नर्व का, वो है एक्सॉन. द एक्सॉन इज अ सिंगल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एक्सॉन हिलॉक. कंपेयर टू डेंड्राइट, द एक्सॉन इट इज स्ट्रेटर इन अपीयरेंस एंड हैज़ अ स्मूथर सरफेस. इन एडिशन, compared to dendrites which tends to be highly branched, each neuron has a single axon that extends and branches at its end. Axon it lacks many of the organelles which are found in cell body.
but it contains microtubules along the length of the axon and a specialized insulating substance which is known as myelin on its surface. This myelin it boosts the transmission of nerve impulses. The branches of branched end of the axon it is known as axon collaterals. Myelin sheet it is made up of cells. These cells they are known as Schwann cells wrapping themselves around the axon. In the central nervous system, this action is performed by the oligodendrocyte cells. Here you can see the structure of axon. This one is axon membrane. The axon membrane it covers to the neurofibrils. These all are the neurofibrils. This one is myelin sheet. Myelin sheet. Here is the nucleus of Schwann cell. This one is the nucleus of Schwann cell, and these are node of Ranvier where two Schwann cells they meet. This node and this gap or space between the Schwann cells this is known as nodes of Ranvier, and these they serve to propagate electrical signals along the axon. So here you can see the structure of axon in detail. Now axon terminals or nerve ending. This is the distal part of the axon. Axon terminals they are the distal part of the axon that comes in contact with other cells, because this part of the axon is largely involved in the release of neurotransmitter. It contains a large number of mitochondria that produce the energy required to facilitate this process. Here you can see this one is the axon terminal or distal part of the axon, or here many numbers of mitochondria are present, or they help to produce energy which is required for the transmissions of nerve impulses. So it was all about anatomy of nerve